every electronic device comes with a technical specification document. Now, when every electronic device comes with a technical specification document where you can see what are the technical specifications of that document. Now, what does it mean? Suppose you are going to purchase a new mobile. Now you can compare the mobile with, you can compare the mobile. Maybe, for example, you need to buy a mobile, you compare 5 brands of mobiles and you put 6 to 7 comparative features. So you say, I'll compare it on a camera. You will say, I'll compare it on maybe storage. I'll compare it on RAM. Fine, Ritayo, you can mark it now. Okay, so okay, so you can compare 5 brands on various parameters as I talked about. So without seeing the mobile, the technical specifications tell you about the mobile. So without seeing the mobile, it talks about the technical specifications, right? So as without seeing the mobile, you can understand from the features what are the critical things about that mobile. So technical specific documentation or the brochure. Now you all are going to join IT companies, maybe product companies or service companies. Now product and service companies will always have their list, their product and their services in the form of brochure. Without seeing the product, you can understand what are the critical features of that project, and that is the key, my dear friends, that the brochure provides the physical feel of the product without actually touching the product. That is what the feature, the power of brochure, or that is this brochure, or that is the power of this brochure, or you can say of this technical specification document. They provide you the details without actually feeling the product. That is also the power of your resume. Now this resume tells the interviewer or the recruiter about the characteristics without they actually seeing it. Right now, right, these days we do provide our picture, but what does this picture not having, or what does this question mark signify? This question mark signifies that candidate is not there, but resume is actually telling the face of the candidate. So resume is your representation. So resume represents the candidate. That is very, very important. So in your absence, resume carries all the things that you have. So basically you are represented by the data that is there. So that is very, very important. This all arrow, this all data, that is what resume carries. And this is the importance. Without your face, the recruiter knows where are you and how are you. So that means what are the key attributes of a candidate are reflected by the resume. So resume is a reflection of your capabilities. Any doubt on this? So shall we move to the next slide? Now here comes first question for the day, my dear friends. Can you differentiate between a resume and a CV? So how do you differentiate? How do you differentiate resume and a CV? Please, can you write on that? Can you give me the answer? How do you differentiate a CV and a resume? So how you differentiate resume and a CV? Can anyone try to answer? Please differentiate between these two. Resume is a brief summary and CV is more detailed. Very good. So 1 point is done. So CV is detailed. That's what they say. CV is detailed. CV is detailed. That's what you say. Okay. Next one. Anyone? And resume is short form. Anyone else?
involving salary expectations too. Which involves salary expectations? Could you tell me? CV or resume? Yeah, that is also, that's not mandatory. CV, that's not mandatory about CV. So this is not counted as a mandatory characteristic of a resume of a CV. Not a mandatory one. Not a mandatory one. This can be one of that, but not a mandatory one. Okay. Anyone else who has any points to make? What does a CV stand for? Anyone can tell what is the full form of CV? Now just break this into two parts. What is the meaning of curriculum? Curriculum means syllabus. Yani syllabus, or that can say work. So basically CV is nothing but it actually details of the work you have done. It is a detailed report of the work you have done. Now understand, a fresher candidate like you will not have too much work to display. उसके पास इतना काम नहीं होगा कि वो उसको display कर सके. So he cannot have a fresher cannot have a fresher can't have a CV. Fresher के पास CV नहीं होगा because he will not have that much work to display. So that's why fresher is used by experienced people. Now, as we have done everything in mathematical way, what is the definition of fresher? Can someone tell me till what years of experience a candidate is called fresher? What is the bracket in which candidate is called a fresher? 0 to 2 years is that bracket, my dear friends. And one suggestion offline, that's why it is said that you should not hop too many jobs between 0 to 2 years, unless and until you have gained 2 years of experience, mostly at least 1.5 to 2 years. You should try to stick to 1 or 2 companies so that you can learn a lot. You can do hopping after that. Now, so 0 to 2 years is a fresher candidate, and greater than 2 years is called a lateral or an experienced candidate. So term used for experienced candidates is lateral. So this is first thing, very important point. And resume is used for freshers and CV for others. Any doubt till now? Is this fine? Are we on same page? Okay. Hope you have forgiven me for those 4 to 5 minutes that got wasted. You're not angry on me for that? Thanks a lot. Okay. Okay, now CV, a very important point for you all. Resume is something, resume is 1 to 2 pages in length. This is globally accepted criteria, 1 to 2 pages in length. Now for LNMIT students, and this is the global trend as well, we are restricting the length of resume to be 1 page. Now there would be certain challenges that you all would have. Sir, in CalExport, it's very tough to get a 1-page resume, what to do? So I am there and we will help you, will help you in restricting your resume to 1 page. Now, what is the criteria for doing that? You need to prioritize. जो चीज काम की नहीं है उसको हटाना है, उसको less length का करना है. So prioritize the length and inclusions, and also decide on exclusion. किसको resume में नहीं डालना है? So we will do that all when we come onto the slide on CalExport. Any questions so far on resume and CV, or the difference is clear to you all? Okay, now let's come to the next one. One more point is you should use professional IDs, which I think you all are thorough. So we should not use such casual IDs as mentioned out here. So that I think you people already know.
No, another point is some of the batches ask me, sir, when we are applying offline, should we use our personal ID or our institute ID? So I feel you can use both. The only key is yeah, Piyush, I would do that. I have a slide for doing that. I have a methodology for doing it. I will help you. Just hold on for another 15-20 minutes. We'll answer it. So good. Yeah. So now, okay. So you can, so what I was telling was that email, that some people ask that whether we should use NNMIT email or we should use a personal email ID for off campus. You can use any ID, it doesn't matter at all, but the only point is you should use that ID frequently. You should not lose the information due to wrong ID being used, which you don't see regularly. Okay, now let's go to the next slide. These are some basic slides which you can go through at leisure. Only I want to highlight on one point. This is very, very important. We never mention on the top of the slide or top of the document that it is a resume. So this is a very big defect, and we all should start start using this method that we should not mention resume on top. हम सब अपने forehead पे इंसान लिख के नहीं घूमते हैं. So that's why we will not write resume on the document. That is very, very important. Okay, so this is one thing that I wanted to bring it to your point. Another thing is, because Calyx Pod is helping you in resume, so this issue will not come. This is a border like a marriage card, which is not globally and professionally accepted. Now let's come to the second point. Again, this Calyx Pod will take care for you because it's all about formatting, bulleting, and all, and spacing and all. So with this, all will be taken care by Calyx Pod for you. So you need not to worry about this, which Calyx Pod will take care of. Now let's come to this very important point, that what is the importance of resume, and some of your part, Piyush, will be answered here. This is, suppose, let's assume this is a triangle. Assume this is a triangle. Now this triangle has got 3 vertices. This is the candidate, so I am putting C for candidate. Now this is the profile for which you are applying in the company. The company I'm calling at as O, organization. So this is the organization to which you have applied. This is the profile for which you have applied. These are very important things. You need to focus upon, the candidate needs to think about what are the key things about the profile. So whatever he wants to highlight in his resume or her resume about the profile, relevant to profile, he or she will focus here. So profile को mind में रख के जो important चीजें हैं वो miss नहीं करनी है resume से. Similarly, the company. Now there's a difference. You'll say, so what is the difference between this profile और company में क्या फर्क होगा? I'll just give an example. For example, the profile is of a software developer, and that too is a web developer. So if the profile is of a web developer, now what does that mean? It means is you need to focus on web related things. So focus on web related things, full stack development, and everything related to web. Now here, this is about the profile. Now suppose the organization that I'm saying is, let me say it is Blue Dart. If the organization is Blue Dart, now that means Blue Dart is from logistics sector. Now it is from logistics sector. That means you need to have a focus on that sector. If you have some related to this sector, operations, logistics, have you done any project? So focus what is relevant to this sector. So maybe the profile is app development, or maybe anything related to app. And so this is suppose the profile, and the company suppose as Swiggy. Swiggy is the company. Now what you need to do focus is on e-commerce related things, maybe response times, user design. So whatever is related to company or similar companies. For example, Swiggy has come to a campus and the profile is app development, and you have done a project for Rapido, so that would always have. So similar type of companies, online e-commerce, online delivery apps, so related to that company. So ऐसे ही अगर आप Blue Dart की बात करें तो relevant चीजें जो हैं, relevant projects, you need to bring them. So that is what is important. Your candidature has that is through resume, so you need to
understand that how do you relate it to the company and the profile. Any question for this? Also, I would like to say one thing here, that for example, a company calls for the profiles and they say please submit your resumes, and on the basis of resume we will do the shortlisting. Now suppose 100 candidates submit their resume and company says we cannot do even written test for 100. What we will do, we'll first call resume and we will do a resume based shortlisting. So they will do a resume based shortlisting. Now what is meant by resume based shortlisting? What they would do is from 100 they will go through these 100 profiles and they will find 20 profiles from those 100 profiles, and that would be done on the basis of resume. Now what is resume based shortlisting? They find out the candidates and they shortlist them from resume, and that can be done in two ways. Either they can ask people to come, either they can ask people to to upload their resume through a tool like CalyxPod, where they get all those 100 profiles and then they get a dump of it and they filter with some characteristics. 95 to 98% this is done, but sometimes 2%, some people still don't rely on tool. What they do is I need to, and mostly the decision makers like CEOs and HR heads, they say I want to see each of the profile because maybe in the parameters it's not coming out, and they may do a check on the resume and then they shortlist. So in that case your resume doesn't get more than 10 seconds. आपके resume को 10 seconds से ज़्यादा नहीं मिलते हैं. So your resume is a marketing tool. It actually brands your profile. So this is very very important. आपका resume marketing tool है. This is very very important. So are you able to understand this? Can we go to the next slide? So you all are with me, my dear friends? That's good. So now this is the slide which is critical. And what I would try to do here is, you should understand in a resume there are two important things. जब भी हम resume की बात करते हैं, there are two important things. One is the data that it contains or the information that it contains. Prerak, not a problem. I think what can you do one thing, because attendance is taken care by my friend. Anyone who has an attendance issue, please you can mail this on this email ID, copying my ID. So Ajay from my team manages the attendance. So you can copy this, copy it to him, copying my ID. Okay. Please mail on to him. He is maintaining the attendance. Okay. Now let's see what is there in resume. Now, resume, what does it so resume has two things which are important about resume. One is the format. So the format of a resume is very important. Another is the data or the information. What another thing is data or the information. So data or the information that a resume carries. So this is very important. You can understand that globally, if you do an internet research, internet search, you will find around lakhs of formats of resume. आपको लगेगा कि lakhs of formats है resume के, which format is globally accepted. So format के बारे में कोई industry का standard नहीं है. They accept most of all the formats. So there is nothing about format that a company says. What they mostly ask is वो आपसे data मांग लेते हैं और कहते हैं can you upload your resume. So आपका जैसा भी format है, they ask you to upload your resume. They only tell you the file type, either PDF or a Word. Mostly PDF is the best format. Now, what does it mean? Then what is the global standard about resume? So globally, what resume is understood is it should give some data in it. वो आपके बारे में information देगा. Now, वो information global होती है in the sense एक format है. तो ये जो mandate, so this is what this box talks about, which I have again included. This box, what this box talks about is, this is the mandatory data. So whatever is there in this box is mandatory. So whatever we talk in this box has to be included. Format किसी भी format में हो ये, but ये data include होना चाहिए. ये data आपके बारे में provided होना चाहिए. Globally this is important. इनमें से कुछ मिस नहीं होना चाहिए और ये मैंडेटरी डेटा है और बाकी सब ऑप्शनल है. इसके अलावा कुछ देते हो वो आपकी डेडिकेशन है, बट दिस हैज टू बी इंक्लूडेड. डज इट मेक सेंस? Now can we talk about one by one about these mandatory items?
अब ये मैंडेटरी आइटम है क्या? नाउ इन दिस स्लाइड विल टॉक अबाउट डेटा। हम क्या क्या डेटा देना चाहिए वो हम इस स्लाइड में बात करेंगे, और कौन सा फॉर्मेट यूज करना है वी विल टॉक ऑन द कैलिक्स पॉड स्लाइड। तो ये हम कैलिक्स पॉड के थ्रू करेंगे। Okay, now let's focus on one by one what data we need to include. First thing is identify yourself. आपके बारे में information दीजिए. Now what is meant by identify yourself? अपने बारे में आप क्या information देंगे? This is very critical. Now when you are giving information about yourself, you would give it like this: identify yourself. इसमें आप क्या information दोगे? You will give something like your name, mobile number, and email. These three are critical. इसके अलावा your GitHub link, your LinkedIn profile link. This is what summarizes your information. Personal में सिर्फ ये देना है. DOB not required. It is not mandatory unless asked. So any doubt on identify yourself, or we are done on this? Are you fine with this? Then let's come to education. What does education thinks of? Education का मतलब है three things: BTech, 12th and 10th. Nothing else. Now, before I move to education, I have something which I will talk to you. This is called 3W. No, then don't write it. Sudhanshu, no. If it's not worth, please don't write it. अभी आपने develop नहीं. Also, if you have not updated, if you haven't updated your LinkedIn also, I would be very honest. मान लो मैंने कितनी बार बताया आपको, but आपने LinkedIn की प्रोफाइल अपडेट नहीं करी, और दो तीन चीजें हैं. If you haven't updated LinkedIn also, आप LinkedIn भी मत डालो प्लीज. आप इन दोनों को डिलीट कर दो उस केस में. Got the point? It has to be reflective. Now what I'm talking next is 3W and RCO rule. This is a rule that is used across RCO. So this is something which is used across all the categories. ये जितनी भी categories है ना, इन सब में जितना data है उन सब में ये rule चलेगा, जिस rule को हम कहते हैं 3W and RCO rule. ये rule पूरे resume में चलता है. ये resume का global rule है. What does this rule say? Just understand, ये जो rule है, ये जो रूल यहाँ पे चेक बॉक्स में मैं बता रहा हूँ, 3W एंड RCO रूल. इसका मतलब 3W का मतलब है वेयर, व्हेन एंड व्हाट, और RCO का मतलब है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसका मतलब जो डेटा है उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे. एंड आप सपोज यू हैव डन BTech, सो यू नीड टू आंसर वेयर, कहां से करी, कब करी, एंड क्या किया, कौन सी ब्रांच में करी, CGPA क्या था. ऐसे 12th का देंगे, फिर 10th का देंगे. Now what is meant by reverse chronological order? Who will answer my question? What is meant by reverse chronological order? Anyone who can answer what is recent first? Very good, well done Harshit. So reverse chronology का मतलब होता है chronology के उल्टा. So chronology में पहले जो पहले होता है वो आता है, बट हमें reverse करना है. Okay, stack. Shatisha, I didn't get stack. Okay, reverse chronological order, you all understood. Okay, so you need to mention your education details in reverse chronological order. Also, CGPA is very important. You should mention CGPA. You should not leave your details without CGPA. Now, this is important because, yes, Shatisha, I couldn't get you. What did you mean by stack? Please elaborate. Okay. I think Shatisha, you are there?
Last done first show. इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सिंपल. लास्ट डन, यस वेरी गुड. लास्ट डन फर्स्ट शो, उसको पहले दिखाओ. वेरी गुड. स्टैक. ओके, वेल डन. In stack, recent items are taken out first, so it essentially means this. Very true. Thanks for updating me. A new term I have learned. So keep talking like this. This helps. I have learned. This is the way. Yeah. Okay. Thanks a lot, Rupesh as well. Now, so are we? So we have understood. Now, education. We have to mention the CGPA also. CGPA is very important. Why? Because some of you may say, sir, my CGPA is 5.5. Why should I mention? My dear friend, it will come to know when you will submit documents to the company. So there's no point in hiding it. I would suggest it is better if you write it in the beginning so that it will avoid any last minute shocks. Sometimes company may say, oh, we were not knowing because हो सकता है वो communication miss भी हो जाए. Maybe they forgot to send to you that that was the condition. So if you would have clarified my CGPA is 5.5, फाइन आपने भेज दिया. नाउ इट इज देयर कॉस्ट. अगर आपने सीजीपीए नहीं लिखा तो कई बार वो डबल शॉक हो सकता है. दे आर गेटिंग. सो एजुकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन और शैल आई मूव फॉरवर्ड? Shall we go to the next category, third category, work or professional experience? Yes, you can round it off. But again, because you're applying to the through the campus, so first check with your TP cell, Shreyansh, that what standard they are accepting. So if a group, a batch should agree on this. So your TP cell should take a call after discussion with Manu sir whether you want to round it off to one decimal or how many decimals. What do you want to do? Got it? So take a decision at batch level. Now next one is work or professional experience. Now this category is very critical. This category is very critical. This includes mostly all the things. And I have a question. Please differentiate between. Can you differentiate between three of them? Are you all there with me? Can you please differentiate between three of them? No pay usually group. Okay. Next. Let's not come to pay very quickly. For us, pay comes very, very quickly. I have heard. Pay के अलावा भी focus करो पहले है ना? हाँ, थोड़ा सा. But it's good project so far. You have told yeah, mainly focus on learning. Okay, project is something we usually do on a personal level. Okay, not perfectly always. This one is decent. Applying the skills we learned. Skills term को use करने से पहले हमेशा वो definition that we learned. What was the definition that we learned about skills? That you need to always agree. So that has to be agreed when we talk about skills. Okay, so project की definition आ गई. Differentiate a project with training and internship. Difference कैसे आएगा तीनों में? Write all three together and differentiate, please. Please try that way.
Harshit, you can try this. This one, I think you'll be able to do it in a better manner. Very good. I think this is very good, Rupesh. Harshit, we work for ourselves, internship for some organization trainings. Very well done, Harshit. Now I think it's very close to what we say. Anyone else wants to try? Rupesh and Harshit have really cracked it. That's precisely correct on training, Charit. So let me try to summarize them with a relationship to each other. Training is learning. Training is what's, let's say, learning a technology, a process, or a domain. Now, whether you pay for it or a company gives you a training, it's different. But training ये होती है. Are we on same page? Now, it can be done through theoretical and practical methods. This is what I would try to define training. Is it making sense? समझ में आया यहाँ पे? What is project? Now one important point. ट्रेनिंग जरूरी नहीं है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके करो, किसी इंस्टीट्यूट से करो. ट्रेनिंग कैन बी डन बाय, कैन बी सेल्फ आल्सो, सेल्फ लर्निंग. So you have got it, that is through online methodologies. These days online training is self learning sort of. Got it? Now, very important, projects are applications of training or learning. आप ट्रेनिंग या लर्निंग जो आपने करी उसका जो एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्ट्स. एग्री? आपने जो ट्रेनिंग में सीखा उसके बेसिस पे या लर्निंग करी आपने, you make projects. Internships, as Rupesh clearly pointed out, solving some problems. So, because what does it mean? Solving problems is fine. I would even make it like it's a semi job or on job learning in a simulated environment. It's basically, you can say semi job. It's basically working with an industry, with a company, or for a company in a simulated or a similar environment or the same environment, and maybe 50 to 60% are conditions are same as that for a job. Fine. Now you're coming to your most coveted point. Internships can be paid or unpaid. But very important point, we would never mention economic terms on resume. रेज्यूमे पे कभी भी इकोनॉमिक टर्म्स यानी इट वाज अ पेड इंटर्नशिप, अनपेड, ऐसे कभी भी नहीं लिखना है. नेवर मेंशन इकोनॉमिक टर्म्स ऑन रेज्यूमे. सो डू नाउ आपको पता लग. एंड वन मोर थिंग, प्रोजेक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, academic or industrial. Academic is what your professors give it to you or which are given in institute. In industry is you do it in consultation with industry at a company or through a company or through some representative. So that is an industrial project. Got it? So are we able to cover all the things? Another thing, what all will come in this category? इस category में और क्या आएगा?
Very important. What will come in this category? This category, your TA will also come, teaching assistants. Your certifications will also come. Online trainings will also come. Everything will come here. Patents will also come here. Research will also come here. अब कैलेक्स पॉड में डिफरेंट होंगे, वो वहां पे देखेंगे क्या क्या यहाँ कवर हुआ, हमने यहाँ कवर किया, और इन सबको जो अरेंज करना है वो आरसीओ में करना है. Now I want to cover a very important point about projects. प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कवर करना है, प्लीज फोकस हियर एंड आई वांट टू यू ऑल टू बी हियर. दिस इज क्रिटिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको लिंक्डइन पे भी ऐसे ही फोकस करना है. व्हाइल मेंशनिंग द प्रोजेक्ट, नॉट ओनली इन रिज्यूमे, इवन इन लिंक्डइन यू नीड टू use the trick that I'm going to elaborate now. Now 3W क्या थे? I am focusing, आपकी इंटर्नशिप है या आपका प्रोजेक्ट है, the way you mention it, I am telling you that. 3W में, for example, let me take it's an internship. मैं एक इंटर्नशिप का एग्जांपल ले रहा हूँ. इंटर्नशिप कहाँ पे हुई? Where? I am taking an example of Rapido bike taxi. और इसकी लोकेशन लिखनी है, यू कैन से बेंगलुरु. सो वेयर का आंसर हो गया ये. नाउ व्हेन आई वुड मेंशन, जस्ट आई एम टेकिंग योर सीनियर बैच फॉर एग्जांपल, आई वुड मेंशन 15th April to 15th July. वेयर और व्हेन का आंसर हो गया व्हाट. अब व्हाट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आई वुड से what was the question by one of my friends who said कि sir how to write a project in very in one page, या बहुत कम स्पेस में हम प्रोजेक्ट कैसे लिखेंगे, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ. नाउ फर्स्टली तो जो आपको प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है वो बहुत बड़ा होता है, 2 लाइन्स, या आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का टाइटल बनाया होता है. when you are writing in a resume you will write your project title in short, so short project title लिखना है एक. when you are writing about the project, what you would write? Short project title. और शॉर्ट टाइटल में क्या लिखोगे? 3 to 5 वर्ड्स में ही उस प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है, या फिर वेरी क्लोज टू इट. 3 to 5 वर्ड्स और क्लोज टू इट. नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? लेट मी टेक एन एग्जांपल and highlight, and also so you need to, for example, you have to say, so I'm taking an example which was done for Rapido bike taxi का मैं example लेता हूँ. अब आप पहले मैं लिखाता हूँ आपने किया क्या, and then I would, so first let me explain explanation of what that person did. So that person worked on one of the critical pages of the app and reduced the page response time from 30 milliseconds to 10 milliseconds. अब by using optimization techniques and coding effectiveness in some technology, blah 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 blah, खूब सारा काम किया. अब प्रोजेक्ट में आप पहले तो इस प्रोजेक्ट का टाइटल दो. सो प्रोजेक्ट का आप टाइटल दे सकते हो ऐप ऑप्टिमाइजेशन, वेरी सिंपल. आपने पूरी ऐप को ऑप्टिमाइज नहीं किया, यू कैन से मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन फॉर द. अब ऐप के कई वर्जन होते हैं. एडमिन का वर्जन होता है, राइडर का वर्जन होता है, और कस्टमर का वर्जन होता है. सो यू कैन से फॉर कस्टमर ऐप, आपने कस्टमर की ऐप में मॉड्यूल ऑप्टिमाइज किया. दिस इज द टाइटल. सो शॉर्ट टाइटल हो गया. आपने चाहे एक्चुअल रिपोर्ट में बड़ा टाइटल लिखा होगा, बट यहाँ पे शॉर्ट टाइटल लिखना है जो मैंने ऊपर बताया, मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन फॉर कस्टमर ऐप. आर यू देयर विद मी माय डियर फ्रेंड्स? अब आपके, so this is what module optimization. Now this is the short title. Now
की हाईलाइट, आपको जो की हाईलाइट देनी है, प्रोजेक्ट को पूरा नहीं बताना है. नाउ वन मोर थिंग, इट इज व्हाट आई वुड से रिड्यूस्ड द पेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ क्रिटिकल पेज. इसकी जगह पेज को दो बार नहीं लिखेंगे, रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ क्रिटिकल पेज बाय 67%. बस अब आपको ये लिखना आपने कैसे किया, कि वो सब यहां मत लिखो. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई जस्ट फॉरगेट, आई थिंक हु आस्क्ड मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, वो एक बार मुझे बताइए. आई विल, कुड यू टेल मी जस्ट अ मिनट, हाउ डू वी reduce it? There was a question about the length. Could you please come, let's drop a hi again so that I can talk to you and we can discuss now. अब बहुत important है, आपने आप now when you mention in the resume, Piyush, very good. So Piyush, that is what is now important. You need to only create suspense. आपको सिर्फ suspense create करना है, thrill create करना है, सारे detail resume में नहीं देने हैं. Because if you will give everything on resume, what will you talk? So your resume should create an interest, and it should engage the recruiter to ask further, to probe further. वो आपसे पूछे, suppose यहाँ पे आपने लिखा critical page, तो वो पूछे कौन सा पेज, उसने कहा मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, कौन सा मॉड्यूल ऑप्टिमाइज किया, लेट हिम आस्क. और आपको सब पता है, और इवन मॉड्यूल थोड़ा सा लिखना है, मॉड्यूल का नाम लिख सकते हो. सो ही और शी शुड आस्क मोर डिटेल्स एंड यू शुड बी थॉरो इन दैट. आप प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल चीजें लिखो, की हाईलाइट लिखो. वन मोर थिंग, यू नीड टू ऑब्जेक्टिफाई एंड क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स. जो प्रोजेक्ट में आपने किया वो समरी मत लिखो, समरी किसी को पसंद नहीं आती. ऑब्जेक्टिफाई एंड क्वांटिफाई द रिजल्ट्स यू obtained. So Piyush, we should only keep again, आपके पास सुपर सेट पता है, योर रिज्यूमे शुड नॉट क्रॉस वन पेज. आपको अंदर वाली चीजें आप अपने आप मैनेज करोगे. आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू कीप द होल रिज्यूमे वन पेज, उससे आगे नहीं जाना. इसके लिए अगर आपको 1 to 2 लाइन से ज्यादा मेरे हिसाब से जगह नहीं है. नाउ देयर इज वन पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, आई डोंट वांट यू टू गिव, अंडरस्टैंड माय लॉजिक, आई डोंट वांट यू टू गिव लेंथ फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी. बिकॉज अगर मैं आपको हर कैटेगरी की लेंथ दूंगा और किसी के पास कुछ कैटेगरी होगी ही नहीं, तो उसका रेज्यूमे आधे पेज का आ जाएगा. व्हाट आई वांट इज, जिसका आधे पेज का है वो बढ़ा के एक पेज का करे. Understand my logic, my dear friends. I also don't want you to have half-page resume. Some of you have half-page resume. So those who have half-page resume need to elongate it to one page. Those who have two-page resume need to shorten it to one page. Now पीयूष, इट्स योर लॉजिक, आपको कितने लाइन प्रोजेक्ट को देने. आइडियली आई एम सेइंग 1 to 2 लाइंस आर, 1 line फॉर शॉर्ट टाइटल, 2 line फॉर क्वांटिफाइंग एंड सब्जेक्टिफाइंग योर रिजल्ट. इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, गॉट इट? डिड आई मेक सेंस? ओवरऑल बिगर पिक्चर बनी? Piyush, was it fine? One more query, do we need to mention technology? Very true. Aap technology mentioned, I think I forgot that. You need to mention, with very good Piyush, you asked it. So you need to answer, you need to mention, वहीं पे जहाँ पे आपने वो सब्जेक्ट अपन ने लिखा ना कि क्वांटिफाई किया, you please mention the key technology where you work. Mention the key technology. Mention the key technology. उसमें कैसे किया वो आंसर, वो मत बताओ. The key technology and tools. For example, आपने IDE यूज किया, कुछ ऑप्टिमाइजेशन का टूल यूज किया, तो वो उन टूल्स के और सॉफ्टवेयर के नाम बता दो. ठीक है, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? शैल वी गो टू द नेक्स्ट वन? सो प्रोजेक्ट्स के बारे में सबको आई थिंक अब क्लियर हो गया सबको. डिड इट हेल्प? ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्टिविटीज. एक्टिविटीज में को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, हु वुड डिफरेंशिएट? जल्दी से बताओ मेरे को, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या फर्क होता है? What is the difference between co-curricular and extracurricular, my dear friends?
Very good. Give me an example, Ritvik. Very true. Example बताइए मेघा. Examples. We can say co-curricular as hackathons, paper writing, paper presentation, quizzes, music, dance, sports, fashion show. These all are, and the hackathons and paper presentation, they were co-curricular. Are we on same page? Computer skills के लिए आप, because you all are computer students, we have a separate slide on skills. I'll talk there. Professional associations का मतलब ये है, all those associations like which are like CSI, Computer Society of India, IEEE, IETE, you are part of it. Now there are international societies, so there are international associations, there are national associations. So if you are member of international and national, then you need not to mention your college clubs. But कोई international और national का member नहीं है तो वो college clubs को भी mention कर सकता है. This is important. You can mention college clubs also. Now what did I mean by this other associations? ये non technical है. मैंने यहाँ पे technical बोला. This talks about non-technical associations like SPICMAC जो music association है, then you have modern UN, TMC, ये सब other associations है. Very important point, objective जिसको आप बहुत critical मानते हो, that is not a mandatory criteria, it is an optional criteria. So you need to understand objective is optional. So we will talk it about later. एक latest slide है इस पे. ये दोनों special abilities और reference statement की बात नहीं करनी है, and your tool Calixport doesn't talk about it, so it takes care of it. Next slide. Okay, what is, so this slide now I think जो next slides है mostly I've covered. I will only stop on the slide which I have not covered. Rest all you can read at your leisure at your homes, please. So let me go to the slides which I have not covered. I think project के बारे में मैंने सब कुछ mention कर दिया. Then there was one point which Piyush you asked, so it is mentioned here. Please read the slides in detail at your home. So this is very important. यहाँ पे हमने बोला, so Piyush, whatever I told, those 2 points are written here. Got it? You can mention it here. ठीक है? So we talked about that. Next slide is achievement and award. I'll take the slide when I talk about Calixport पे जो slide है वहां से आऊंगा. This is the key slide I want to talk for 2 minutes. Technical skills and non-technical skills. So skills की slide पे I'll talk here. Now one thing is, what was the definition of skill when I gave it to you last week? हमने skills की क्या definition दी थी? याद करो. What is the definition of skill? मैं बार-बार पूछता हूँ. That is very true. ये definition आपको life में कभी नहीं भूलनी है. और that is critical. Skill is a very heavy word. हम लोग कई बार इसको बहुत lightly use कर देते हैं. Skill is a heavy word. So याद रखो, ये वही definition है जो अपन ने वहां लिखी थी. But remember, हमने strength में एक बोला था कि strength में हमने सारे skills हमारी strength नहीं बनते थे. Only those skills which were better than others were becoming our strength. So यहाँ पे strength नहीं है, skill है. जो भी मेरे skill थे मैं यहाँ लिख सकता हूँ. But skill की definition है, अगर मैं कहता हूँ coding is my skill. Now first thing is it enabling me to earn? क्या ये मेरा job लगवा देगी? इस level की है मेरी skill, तो ये मेरी skill बनेगी. So first thing is, only with which you can earn, it will come here. Now another point is coding. सिर्फ coding नहीं लिखना है, you need to write, elaborate करना है थोड़ा सा. Open ended skills नहीं होने हैं. You need to elaborate, at least write 4-5 words. One word नहीं लिखना है, elaborate करनी. Coding कौन सी coding? Competitive coding. अगर आप ये भी लिख सकते हो कौन सी language में, it would be better. So please write it. Which type of coding and what language do you prefer? So coding में अगर language लिख सकते हो, it is better for you. Then software मैंने software इकट्ठे actually एक bulk term use कर ली है. This includes all
फ्रंट एंड बैक एंड ऑल दोस टेक्नोलॉजीज एवरीथिंग, आपको जो आता है आप उसको इलेबोरेट करोगे। अगर आप लिखते हो, if you are writing, suppose you are writing Node.js, so you need to write Node.js, and again Node.js तभी लिखोगे क्या Node.js में स्किल है जिसपे जॉब लग जाएगा। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, I've seen candidates जिन्होंने सिर्फ एक ट्रेनिंग कर ली और वो उसको स्किल में डाल देते हैं, बट ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल जाएगा unless and until you have that level, you have attained a level where you can solve problems using it। आपको जॉब के लेवल का वो आता है क्या, तभी वो स्किल में आएगा। आपने ट्रेनिंग तो 10 चीजों की करी होंगी, that doesn't give you an authority to write it as a skill। is it of that level that you can get a job? सिंपल आपको समझना पड़ेगा। आपने उस पर इंटर्नशिप करी, प्रैक्टिस, अब सिर्फ करने से नहीं होता है। यू कैन से सर आई हैव 10 सर्टिफिकेट्स, नो माय डियर, सर्टिफिकेट कितने भी हो, बट इज इट ऑफ दैट कैलिबर दैट कैन इट ऑफर यू अ जॉब? सो स्किल का मतलब ही वो है जॉब मिलता है क्या। सिमिलरली नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्किल क्या आपको स्किल उस लेवल के हैं ड्यू टू विच यू कैन गेट अ जॉब। आप RHCA हो, नॉट ए प्रॉब्लम, आपने 10 सर्टिफिकेशन कर लिए सिस्को के, बट हैव यू अटेन्ड दैट कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी, आपको जॉब मिल जाएगी। डू यू फील आपने वैसा कुछ किया है? सिमिलरली फॉर डिजाइनिंग, आपको ये सारे स्किल नहीं लिखने हैं, मैंने एग्जांपल लिए हैं स्किल्स के। एनी डाउट ऑन टेक्निकल स्किल्स? आई एम ऑल योर्स। Shall I go to non-technical skills in that case? Now non-technical skills में again बहुत important है, they should also give you a job, ये भी आपको earn करवाएं। non-technical को बहुत lightly ले लेते हैं हम लोग। Now I have taken simple examples, languages, what is the meaning of languages? Here is German, French। Now it doesn't mean कि आप फ्रेंच में bonjour बोल लेते हैं तो आपको फ्रेंच आ गई, नहीं। what does it mean? फ्रेंच में इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कैन यू वर्क एज अ कंटेंट राइटर, आप फ्रेंच समझा सकते हो क्लाइंट को, is it that level? If your language knowledge can earn you, then you have to write it as a skill, otherwise please avoid it। now the next skill is networking। यहाँ पे जो networking की बात हो रही है, वो बात हो रही है people networking की। अब people networking से आपको कैसे स्किल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। कई लोगों को पीपल नेटवर्किंग से प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं और फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स वो यहाँ से लेते हैं, ये उसकी नेटवर्किंग स्किल से मिल रहे हैं उसको प्रोजेक्ट्स, सो नेटवर्किंग स्किल से अर्न कर रहा है, इसलिए नेटवर्किंग उसकी स्किल है। ऐसी कोई स्किल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पब्लिक स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल किसी को पब्लिक स्पीकिंग से जॉब मिला है, सो ये पब्लिक स्पीकिंग उसकी स्किल हो जाएगी, बिकॉज उस पब्लिक स्पीकिंग से उसको जॉब मिला है और उसको अर्निंग वो अर्न कर सकता है। वो फ्रीलांस एंकर है, वो फ्रीलांस कंटेंट राइटर है, उसकी राइटिंग स्किल्स ऐसी है, तो that person can write that as a skill। any questions on this? यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, आपको इंटरव्यू में आपको रेज्यूमे पे लिखना है या नहीं लिखना है, बट कई बार जब आपके रेज्यूमे की बात होती है और आपने रेज्यूमे में हॉबीज और इंटरेस्ट मेंशन नहीं किए हैं, तो इंटरव्यूअर पूछता है आपसे व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू डिफरेंशिएट between a hobby and interest? Please answer to this। hobbies are something which we do daily। उल्टा हो गया। सुधांशु इज करेक्ट, सुधांशु इज करेक्ट। हॉबीज वेरी ट्रू। हॉबीज की डेफिनेशन विनायक ने भी करेक्ट दी है। नहीं, हर्षित उल्टा है, उल्टा नहीं मतलब हॉबीज का गलत है।
ओके, नाउ शैल आई ट्राई। हॉबी की डेफिनेशन सही थी, that was Sudhanshu gave, it was very correct, and Vinayak also said. So hobby की definition correct है, whatever you do in free time। जब आपके पास फ्री टाइम या पास टाइम होता है तो आप जो करते हो वो हॉबी होती है। इसका मतलब अगर 6 महीने से फ्री टाइम नहीं है तो मैंने वो नहीं किया। एग्री? नाउ व्हाट डज इट मीन? हॉबी इज व्हाटएवर यू डू इन फ्री टाइम। इसी पैरामीटर पे इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? फॉर विच यू टेक आउट टाइम। आप जिसके लिए टाइम निकालते हो, आप जिसके लिए टाइम निकालते हो वो इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? हॉबी तो आप 6 महीने में एक बार करोगे, 2 महीने में एक बार करोगे, खाली टाइम होगा तो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्री टाइम नाउ, आई विल वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, दैट इज माई हॉबी। आई हैव सम टाइम, आई विल प्ले टीटी विद माई फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो इज माई हॉबी। ये दो मेरी हॉबी होगी। हो सकता है मैंने टीटी 3 महीने में एक बार खेली, मूवी मैंने 4 महीने में एक बार देखी, बट ये मेरी हॉबी है। मेरे लिए कोई प्रेशर नहीं है कि मैं इनको डेली करूंगा। गॉट द पॉइंट? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉबी। Interest is something for which you take out time. That means I allocate fixed time to my interest or for my interest in my schedule। मैं मेरे शेड्यूल में उसके लिए टाइम फिक्स करता हूँ। इसका मतलब मैं डेली 1 आवर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता हूं तो वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं डेली 1 आवर जिमिंग करता हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है। 1 आवर डेली स्विमिंग करता हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं डेली 1 आवर नेटवर्किंग यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए कुछ काम करता हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं डेली 1 आवर रोबोटिक्स के लिए कुछ करता हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है। 1 आवर की जगह इधर उधर हो जाए इतना मैथमेटिकल नहीं है, बट मैं डेली करता हूँ। मैं डेली सिंगिंग करता हूँ, मैं उसका रियाज करता हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट है। कोई डांस डांस करता है क्लासिकल या कोई सा भी, डेली 1 आवर कर रहे हैं पिछले 5 साल से, वो उनका इंटरेस्ट है। इवन यू डू मेडिटेशन डेली फॉर वन आवर, इट इज योर इंटरेस्ट। अब आपको समझ में आ गया कि हॉबी और इंटरेस्ट में फर्क क्या है। नाउ टेल मी, इफ इन इंटरव्यू इफ इन इंटरव्यू if in interview you are asked questions, interviewer will expect you to know more in which area। वो किसमें एक्सपेक्ट करेगा कि आपको नॉलेज ज्यादा होगी? interviewer will expect you to know more in hobby or interest। लॉजिक बताओ, आप किसको ज्यादा टाइम देते हो, इंटरेस्ट को कि हॉबी को? वो आप में किस में ज्यादा नॉलेज एक्सपेक्ट करेगा आपसे? वेरी ट्रू। इसका मतलब इंटरेस्ट में वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे ज्यादा नॉलेज। सो अनदर पॉइंट इज, जिस भी चीज को आप इंटरेस्ट बोलोगे, दैट मींस यू आर डीपली इन्वॉल्वड इन इट। सो व्हाटएवर, सो इन योर इंटरव्यू व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाट इज योर इंटरेस्ट गाइस, देन यू नीड टू बी कॉशियस। सो जिसके आगे आप इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रहे हो, कॉशियस रहो, और उस पे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। हॉबी, he or she knows it's casual, you do it for very less time, you do it in free time, so casual questions पूछे जाएंगे, जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन लो होगी। इंटरेस्ट में एक्सपेक्टेशन हाई होगी, डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे, ग्रिलिंग क्वेश्चंस। आगे समझ में? जरूरी नहीं है कि एवरी पर्सन विल हैव एन इंटरेस्ट। हम में से कई लोग अपने रेगुलर डेली कोर्स में ही इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, इंटरेस्ट को टाइम नहीं देते हैं। सो इंटरेस्ट मेंशन मत करो। इंटरेस्ट टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, बट हॉबीज सबके पास होती हैं। 1 से 2 हॉबी हर किसी के पास होती है। गॉट द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट? आई वुड नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं जल्दी से लास्ट 2-3 मिनट्स में एक बार इसको ब्राउज करा दूंगा, कैलिक्स पॉड वाले एरिया को, देन वी आर डन फॉर दिस टॉपिक। अब ये कैलिक्स पॉड के फील्ड्स हैं, इनको मैं ब्राउज कराऊंगा और कहां पे क्या डालना है वो कराऊंगा, और 1 पेज में कैसे करना है फिर रिवाइज कराऊंगा। एजुकेशन में हमने बात करी, एजुकेशन में क्या आएगा, डू यू रिमेंबर? सो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी वुड पुट इन एजुकेशन, वो सारा एजुकेशन में आ जाएगा, राइट? ठीक है, सो वी विल पुट दैट इन एजुकेशन। नाउ व्हाट वी राइट हियर, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप में तो क्या आएगा, केवीपीवाई, एनटीएसई, एसटीएसई, ये सब आएंगे स्कॉलरशिप्स में। अवार्ड्स में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक या अवार्ड मिले, वो आएंगे किसी भी एक्टिविटी में। आपको एकेडमिक के लिए कोई अवार्ड मिला, कई बार किसी की मेमोरी में कुछ अवार्ड्स होते हैं,
those will come here in awards. तो यहाँ पे आप academic डाल दो और कोई award मिला best student, all those awards will come here and scholarships will come here. Mostly आप यहाँ पे academic को ज़्यादा focus दो, that would be awards and scholarships. Got it? Even कई बार best singer award sort of दो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो. It is your choice. So it is basically one first, second, third rank something award जो मिला वो यहाँ आया, scholarship यहाँ आई. Work experience because मैं देखता हूँ कि नीचे बाकी सारी कैटेगरीज हैं तो वर्क एक्सपीरियंस में कुछ खास होता नहीं है, बट यू कैन मेंशन टीए. आप टीचिंग असिस्टेंट्स को यहां लिख सकते हो, टीचिंग असिस्टेंट्स को यहां लिख सकते हो, सो दैट इफ इट व्हाट यू वांट टू पुट समथिंग. बट अगर आप यहां नहीं लिखना चाहते हो टीचिंग असिस्टेंट्स को, आप यहां पे अचीवमेंट्स में भी लिख सकते हो उसको. बट आई थिंक इफ यू पुट हियर इट इज बेटर. नाउ लेट्स कम टू इंटर्नशिप. के बाद हमने कर ली, इन दोनों की बात हमने कर ली थी. रिसर्च, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है तो आप यहां लिखोगे, नहीं है तो डिलीट कर दो उसको. गॉट द पॉइंट? अगर आपके पास टीए नहीं है तो इसको भी डिलीट कर दो. सर्टिफिकेशन, वॉट एवर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स यू डिड, उनका यहाँ पे सर्टिफिकेशन, सिर्फ सर्टिफिकेशन पास यू शुड अवॉइड. अगर आपने सिर्फ ट्रेनिंग की है, अगर कोई एग्जाम क्लियर किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे. अगर आपने सिर्फ ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग के कंप्लीशन वाले को सर्टिफिकेशन में मत डालो, सिर्फ ट्रेनिंग की है तो यहाँ डालो. कोई एग्जाम क्लियर किया है तो यहाँ डालो. गॉट द पॉइंट? तो जो सर्टिफिकेट्स आपने एक्वायर की, एक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है, सिर्फ ट्रेनिंग वाले नहीं है. सपोज आपने मशीन लर्निंग में कोई सर्टिफिकेशन किया है, उसमें आपने कुछ एग्जाम क्लियर करके कुछ अगर आपने मशीन लर्निंग को सर्टिफिकेशन में डाल दिया है तो फिर वहां पे ट्रेनिंग में रिपीट मत करो. जब आप मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो ट्रेनिंग में डालने की जरूरत नहीं है. सो डेटा की रिडंडेंसी नहीं करनी. अदर डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. पर्सनल डिटेल्स में जो आपका नेम, अपन ने 3 चीजें बात करी, यहाँ पे आप अपनी गिटहब और वो लिंक्डइन की जो हमने बात करी वो भी कर सकते हो. सो एनी क्वेश्चंस आई थिंक, और इस सबको मिला के आपको 1 पेज रखना है. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ना तो लेस ना मोर. आर वी ऑन सेम पेज? प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस. नाउ आई एम ऑल योर्स. Just a minute. Having a set, okay, I'm just picking up. I'm just picking up. Okay, just give me a moment. Okay, what about the internships getting cancelled? Naman, we'll pick up this later. This is about something. अभी हम अपने skills की बातें कर रहे हैं. We will have a different. We will pick this up later. अभी अपन resume की बात करते हैं. We'll not divert from the topic. Please, a request. It will be generic for all, है ना? वो बाद में बात करेंगे. Let's focus to the topic for the day. Having a certificate of achievement is compulsory. Yes, if you have now. Achievement, you must have a certificate, otherwise how would you do? You have an achievement without a certificate, or if you lost it, there can be a case that there was a certificate, you lost it honestly. Now उस केस में आपको जिन लोगों के सामने सर्टिफिकेट दिया गया था उनको पता होगा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट तो करता है, then it's fine. But if you don't have a certificate and you are faking it, it's wrong. Somehow I got a prize, for example, कई बार होता है, you got a shield and you lost that shield. Fine, you can mention it. Honesty is the policy. Got that point? Honestly अगर वो है तो आप mention कर सकते हो, but it should be honest. Now Richa, guys, Naman, is it fine? We'll talk it later. Sudhanshu, was I able to clarify? Richa, sir, some of the companies ask for IDs of specific coding platforms. What we practice on some other platforms. Okay, Richa, this is a two-way process. If from the past, when you've seen your seniors ki jis platform ko zyada manga jata hai, it's better to use that platform. And if we practice on some other platforms, what you can do, though they are asking, अब आपको लास्ट राउंड पे पता चला कि वो कोड शेफ को पूछ रहे हैं, but you have done on HackerRank, तब आप कह सकते हो there's no point in at least providing them the details. But I would say थोड़ा homework कर लो और कोशिश करो कि relevant platforms पे ही काम करो. But you can mention, even if they ask, you can mention, sir, I'm not having that platform, but on a related platform this is there. Related platform, it's there.
Okay, so mention that and do some homework if we can crack that platform name earlier, and we can do it. Okay, good. Anyone else related to resume? Let's end ये calyx pod वाला point किसी को है please. Also you have option of preparing many resume, so please prepare resume, lot of resume if you want, but default resume उसी को रखो जिसको आपको apply करना है. ठीक है? Okay, anything else or we are done for the day?